एजुकेशन, you will add health, है ना, you will add recreation, यानी इन सब के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए. So that is living wage, which is going to give you a better life, so that you can sustain a life with a decent standard of living. So you have enough wage so that you can have income for, suppose you want to buy a health insurance, so you should have that income. गरीब आदमी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रख पाता, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज है, काम की चीज है, बिकॉज इट हेल्प्स यू ड्यूरिंग अनयूजुअल टाइम्स, है ना. तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ वेज वेयर either you are insured by the company or you should have, or you should have enough so that you can spend on education, you can spend on health, you can spend on these kind of things that decides your standard of living. That is what a living wage will be. तो लिविंग वेज और इसमें थोड़ा अंतर इसलिए होता है. मिनिमम वेज मतलब बेयर मिनिमम वेज, जो इनफ है मेरे सस्टेनेंस के लिए. सस्टेनेंस के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, आई नीड रोटी कपड़ा और मकान. So I need food, clothes, shelter. So that wage which can give me food, clothes and shelter for 30 days in a city like Delhi will be the minimum wage of Delhi. But when I say the living wage will be far greater, because I have to educate my kids. If somebody falls ill in my family, I have to get them treated as well. Then I have to have money so that I can send my kids to the other places. So transportation money. So there are so many things. I can give them food that are specifically nutritious food. So I'm not saying bare minimum food that is required, nutritious food, that is what will be a living wage, है ना. तो living wage की concept वहां से आती है, ठीक. और संविधान ये शब्द यूज कर रहा है that we have to provide living wage to the people. Decent standard of living के लिए जितनी चीजें जरूरी है, that would be assumed as, understood as a living wage. ठीक है, ये समझ गए हम लोग पहली बात. दूसरी बात यहां देखेंगे हम लोग, दूसरा प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक. अब गांधीयन प्रिंसिपल के भी बड़े सिग्निफिकेंट आर्टिकल हैं, बट इस पे आने से पहले मैं एक बात पहले समझाना चाहता हूं आपको. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू नो दैट bulk of the constitution was through consensus, which means there was discussion, debate, there was consensus which was worked out in the constituent assembly. And you would see that there was a very strong Gandhian presence in the constituent assembly also. There were people who were followers of Mahatma Gandhi, जो कि उस वक्त पॉलिटिक्स में थे. Gandhi was not somebody who was part of the assembly for sure, because Gandhi never contested elections. Gandhi was above these political contests, you could say. But there's one thing with Gandhi, and which is that Gandhi had enormous influence. But Gandhian influence by the time when constitution was being drafted had declined. Which means, Gandhi was not the most influential leader of the country. Why? Because that was visible in the way and the manner in which constitution was drafted. So Gandhi represented a political idea of decentralization, है ना. गांधी क्या चाहते थे? Gandhi was a theorist, an ideologue who believed in decentralization. What does it mean? Why decentralization? Because Gandhi did not like the Western civilization. Actually, गांधी के जो विचार हैं उसमें महात्मा गांधी हमें कैसे दिखते हैं? गांधी इज, उनकी जो राइटिंग्स है, दैट इज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी. आधुनिकता को गांधी बहुत अच्छा नहीं मानते, है ना. आजकल अगर आप देखें तो आप सब मॉडर्न कहलाना चाहते हैं. कोई आपको कह दे कि आप मॉडर्न नहीं है तो उसको आप बुरा मानेंगे कि भाई मॉडर्न कैसे नहीं है, है ना. मॉडर्न में थोड़ी सिंग और नंगड़ी थोड़ी होता है ना. तो मॉडर्न क्यों नहीं है? मॉडर्न तो है हम. But if somebody tells you that you're not modern, you will take this as a, offense. It's an offensive thing. Why? Because you are so influenced by the identity of modernity. And if you look at Mahatma Gandhi, he's a staunch critic of modernity. So why is Gandhi a critic of modernity? Because Gandhi is a very different philosopher. Gandhi's philosophy tells you that if you look at the world, where does the problem of the world comes from? So India is a colony. What is the root cause of colonialism? And Gandhi traces this to modernity. He says that
What has modernity done to the world? Modernity has just destroyed the entire universe, the entire planet. Why? Because Gandhi would say that modernity has created a culture of consumerism. है ना? कौन से कल्चर को ये प्रमोट कर रहा है? Consumerism. Why consumerism? Because you are talking about materialism. आपके पास एक घर है, संतुष्टि नहीं है, एक और होना चाहिए. एक गाड़ी है, संतुष्टि नहीं है, इस कंपनी का एक और होना चाहिए, ब्रांड का एक और होना चाहिए. ऐसे जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है इसमें से गोल गोल से आगे बने होते हैं साइंस, आप बोलेंगे वो वाली कार चाहिए, होनी चाहिए. ये सब जो देसी है वो बहुत मजेदार नहीं है. फिर कुछ बोलेंगे नहीं, उससे भी ऊपर की चीज होनी चाहिए, तो BMW जैसा एक बड़ा ब्रांड होना चाहिए हमारे पास, है ना. और भी बड़े बड़े नाम है ना, मुझे उतना पता नहीं है इसलिए मैंने BMW ही बोला. तो BMW और मे बी ऑडी, गोल गोल से सिंबल्स होते हैं उनके, मर्सिडीज, है ना, इस तरह के बड़े ब्रांड. तो अगर मर्सिडीज है तो BMW भी चाहिए, BMW है तो फिर ऑडी भी चाहिए. दिस इज consumerism at its best, at its peak. You are never satisfied. Now in capitalism, if you are not consumerist, capitalism will not survive, because there has to be constant demand. That is why things will be produced and you have to purchase those things. That's what keeps the factories running. Gandhi says this is the culture, consumerism, materialism. Now who has invented this culture? The West, with industrial revolution. So Gandhi is basically saying this has also led to industrialism. और गांधी को देखो कि कितने रेलेवेंट हो गए गांधी इस वजह से. तो गांधी कहते हैं कि इन ये सब चीजें जितनी भी हैं, इन सब ने क्या बनाया? दिस बेसिकली क्रिएटेड अ वैल्यू. व्हाट इज दैट वैल्यू? द वैल्यू इज ग्रीड. कि कभी ना खत्म होने वाली भूख. इसलिए एक है तो दो, दो है तो तीन, तीन है तो चार, भूख खत्म नहीं हो रहा आपकी. You are constantly moving towards consumerism, materialism. So Gandhi says this develops in West, which means this is the creation of modernity comes from what? Western civilization. पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जगत से, ये सभ्यता से निकली है ये आइडिया. और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब उनकी ग्रीड सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया? They started looking for more markets. And now what happened? That was for more markets, for more greed, it led to the rise of colonialism. तो आज हम colonized हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? Modernity. This is what Gandhi would indicate. He would say that they had developed industries, they were producing goods, they were making profits, but they still wanted more profits. How would they get more profits? By producing things at a cheaper rate and selling it to the market at a higher rate. So where's the market? Their market might be saturated. So they have to look for other markets. That's why they have to look for other places of the world. They have to look for colonies, and therefore comes colonialism. So he said that civilization is not constantly wanting more and more. आप देखो प्रचार भी कि दिल मांगे मोर. It's a typical slogan of consumerism. क्यों दिल मांगे मोर? ऐसा क्या है उसके अंदर? What you are saying is completely unhealthy चीज, और उसको बता रहे हैं कि दिल मांगे मोर, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको बह रहे हैं दिल मांगे मोर. और फिर who will be attracted? यूथ. उसको लगता है कि भाई ये तो बस, है ना, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आकर के इसको एंडोर्स कर दिया, फिर तो ये अच्छी चीज होगी. दिस इज हाउ इट वर्क्स. बट ये जो स्लोगन है, दैट इज टिपिकली अ स्लोगन ऑफ मटेरियलिज्म, वेयर देयर इज नेवर एंडिंग डिजायर, ग्रीड टू कंज्यूम मोर एंड मोर. So Gandhi says, how is it going to end? He says, people say this is Western civilization. Gandhi says this is not civilization. Civilization does not mean increasing your needs. Civilization means that you are able to satisfy in limited resource. He says, look at this civilization. Even if you have 7 earth, they will not be satisfied. Forget about this one earth satisfying the greed of modern civilization. So what is the way out? Gandhi says the way out is only to move. The only way out is to move out of the entire equation. इससे निकलना पड़ेगा हमें. कैसे निकलेंगे? तो गांधी ने कहा कि therefore Gandhi says that this Western civilization is satanic. ये सभ्यता हो ही नहीं सकती. सभ्यता है कि कैसे हम
लिमिटेड रिसोर्स में अपना जीवन जी सकें। इनके पास तो कोई लिमिटेड रिसोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट इज unsatiable desire, innumerable desires, greeds, and therefore Gandhi was actually the one who was a critic of the modern civilization because of it. तो गांधी ने जो पाथ हमें बताया, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो चीजें थी गांधी उसके इतर हमें सब चीज बता रहे हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमें मॉडर्न कोर्ट सिस्टम दिया, गांधी उससे क्रिटिक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमको मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम दिया, गांधी उससे क्रिटिक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमें मॉडर्न सेंट्रलाइज स्टेट दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गांधी उसका क्रिटिक है। तो गांधी क्या चाहते हैं? गांधी चाहते हैं दी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम गांधी का कैसा हो, तो इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, यानी गांधी सारी शक्ति केंद्र में नहीं रखना चाहते। गांधी पावर वहां रखना चाहते हैं जहां लोग रहते हैं, है ना। जैसे अभी का मॉडल क्या है, ऐसा है मॉडल, लोग सबसे ज्यादा यहां रहते हैं लेकिन पावर कहां है, यहां है। गांधी इसको बदल देना चाहते हैं। गांधी कहते हैं सबसे ज्यादा पावर वहीं होगा जहां लोग रहते हैं। आई विल मूव द पावर टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो गांधीज मॉडल वाज लार्जली द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, और इस मॉडल को हम क्या कह सकते हैं? आइडिया ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग विलेज रिपब्लिक, यानी पावर किसके पास ज्यादा हो? मोर पावर टू विलेजेस, यानी मोर पावर टू पंचायत्स, है ना। इसलिए पंचायती राज के आधार पे गांधी स्टेट चाह रहे थे। सारी शक्ति कहां? पंचायत के पास, जहां राज्य अपने सारे निर्णय लेगा, लोग अपने सारे निर्णय लेंगे। तो जहां लोग वहां पावर होनी चाहिए, जहां लोग हैं वहां पावर नहीं है। पावर कहां है इस सिस्टम में? यहां पर है, जहां कुछ लोगों के पास पावर है। एंड दे रूल, दे गवर्न। सो दिस इज नॉट व्हाट गांधी प्रमोटेड। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कसेस दिस इशू, एंड देयर यू फाइंड that most of the people in the Constituent Assembly, they are modernist. They want a centralized state. They don't want a village-based republic model of democracy. Why? Because there is Ambedkar. Ambedkar says that what is village? Village is the den of localism and caste politics. If you really want to eliminate casteism from India, you have to first dismantle this village-based existence. So caste system can be dismantled only in urban India. So they would say that we will promote urbanization, industrialization, we will create modern India. Gandhi says we have to go back to the roots. We have to create an India where major power lies with the villages. We have to promote the idea of a decentralized model, Panchayati Raj model. Ambedkar said with this model, casteism would never vanish. Because in village, you have a very strong caste-based identity. जैसे अपने गांव पहुंचते हैं, सबकी अपनी अपनी जाति की पहचान हो जाती है। गांव जैसे ही छोड़ते हैं, शहर में आते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं, nobody knows your identity, है ना। So you basically dilute, diffuse your identity when you move from village to urban area. So Ambedkar was a modernist, so was Jawaharlal Nehru, so was Patel, and therefore the constitution that we created, we tried to create a modernist state. But Gandhi had some ideas, and followers of Gandhi who were in the Constituent Assembly, they wanted the Gandhian state. So there is discussion. And what is the compromise? The compromise is DPSP. उन्होंने कहा ठीक है, हम गांधी को मेन कॉन्स्टिट्यूशन में तो जगह नहीं दे सकते, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट विल बी अ मॉडर्न स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। ये तो स्ट्रक्चर बन गया। देन वेयर इज गांधी? तो गांधी का स्ट्रक्चर कहां बनेगा? उन्होंने कहा ठीक है, राज्य को हम ये निर्देश दे देते हैं कि राज्य को ये कोशिश करना है कि जो गांधी ने हमें आदर्श बताए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, उन प्रिंसिपल्स को भी हमें लागू करना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट इन द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कुड नॉट गिव यू एनी स्पेस। तो कॉम्प्रोमाइज जब हुआ, नेगोशिएशन जब हुआ दोनों के बीच में, तो वो कॉम्प्रोमाइज बन गया डीपीएसपी। और उस डीपीएसपी में वो प्रिंसिपल जो गांधी के आइडियोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण थे, दोज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स विच वर crucial, important in Gandhian principles or ideology, and they found mention in the directive principles of state policy. So you could say that it was a compromise between the modernists and the Gandhians in the debate in the Constituent Assembly. ठीक, तो गांधी ने जो पंचायती राज मॉडल कहा, यानी गांधी ने जो प्रोग्राम्स बताए, गांधी ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट बताया, गांधी ने जिस आइडियाज को बहुत महत्वपूर्ण माना
that these should be the ideas that the state should observe, that the state should implement. Those ideas were written in DPSPs. And for academic sake, we refer to those ideas as Gandhian principles. Not mentioned in the constitution as Gandhian principle, they are merely mentioned in the constitution as provisions of the constitution. But we are, for the reading's sake, for the convenience of academic reading, we are calling it some prominent Gandhian principles. What is the most prominent Gandhian principle? That is Article 40 of the Constitution. Article 40 क्या है? To organize village panchayats. क्योंकि गांधी पंचायती राज चाहते थे भारत में. गांधी चाहते थे सारी शक्ति कहां हो? जहां लोग रहते हो. तो इसलिए लोगों को शक्तिशाली बनाना चाहते थे. वो सारी शक्ति पंचायत को देना चाहते थे कि पंचायत सारे निर्णय ले. तुम्हें क्या चाहिए पंचायत में बैठ कर डिसाइड करो. ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या प्रोग्राम, किस चीज की उनको जरूरत ज्यादा है. और शक्ति पंचायत के पास होगी तो फिर पावर कहां होगी? लोगों के नजदीक होगी. Which means he wanted that power should remain close to people, not very far away from the people. That's what Gandhian model was. So centralization is that model where power remains very far away from the people. Decentralization is the model where power remains closer to the people. So he wanted more power at the lower level than the upper level. He wanted more power to panchayat, and what panchayat would not do, that would go to the next level in hierarchy. Then the next level in hierarchy. And center would have very limited powers. International relations, foreign policy, defense, currency, this would be central power. Otherwise, most power will be with the village. Okay, so that was Gandhi. So Gandhi in Article 40, in the DPSP, we mention a very significant Gandhi principle which says that we have to organize village panchayat. So state ko koshish karna hai, the state has to strive to organize village panchayat and give powers to village panchayat so that they become functions of units of self government. आज भी हमारे यहाँ पंचायती राज है. 73rd 74th amendment अगर आप देखो तो this is nothing but implementation of Gandhian dream. That's the idea. हमने गांधी के ड्रीम को ही इंप्लीमेंट किया है. लेकिन अभी भी आर्टिकल 40 is not implemented in true letter and spirit. Why? Because we have not given enough power to the panchayats to work as units of self government. क्योंकि आर्टिकल 40 में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत इन सच ए मैनर, एंडाउ देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज दैट दे बिकम यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो ये तीन शब्द लिखे हुए हैं वहां पर. दैट इज टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स and endow them, ENDOW, and endow them with necessary powers and authority, and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as unit of self governance. To enable them to function as unit of self governance. Self-government, self-government. Government, self-government. Function, unit of self-government. Next article is Article 43. So Gandhi is a person who is not in favor of big industries. Gandhi promotes the idea of small scale. Small scale means cottage industries. Why? Because Gandhi always believed that India is a country with huge population. So Gandhi is not like he's much against industrialization as such. He's against heavy industrialization. He believes that in India we should have a system where we should work by men. Manual working को ज़्यादा focus करना है. We should not have big machines which will take away man's work, people's work. So Gandhi said that what I would want is, I want even decentralization in the production process, so that
The production process is based on small scale, that is cottage industries. So Gandhi have always promoted the concept, the idea of cottage industries in his economic ideas. Now, if you see today's world, when we are strongly reeling under the problems of pollution, you would actually see that Gandhi is much relevant, because with cottage industries, with more manual working and less energy based work, what you can do is you can actually secure and protect environment as well. So Gandhi is always somebody who favors the idea of cottage industries. Modernity में क्या है? We will favor the idea of big industries. So Ambedkar would favor industrialization, क्योंकि इंडस्ट्री बनेगी तो उसके आसपास फिर लोग रहना शुरू करेंगे, and gradually that industry belt will convert into a urban center, and it will transform into an urban center. So we have to build industries in India so that India is able to transform into an urban center. That's the basic idea. But Gandhi is against it. He favors small scale. He favors cottage industries. That's why in Article 43 we see this instruction to the state that you have to promote cottage industries on an individual or cooperative basis, okay, in rural areas. So Article 43, to promote तो कुछ और भी तो लिख सकते हैं ना उसमें, आर्टिकल बड़ा भी तो हो सकता है. हाँ, Article 43 to promote cottage industries, on an individual or cooperative basis. Cooperative काफी बन रहे हैं आजकल देश में, तो गांधी was like somebody who favored these kind of ideas कि wealth कैसे हो, cooperatives में हो, on cooperative basis in rural areas. ठीक है. Then there is Article 46. Article 46 is another very important article because आपको याद है चंपाकम दोराईराजन केस? चंपाकम दोराईराजन केस में जब तमिलनाडु स्टेट ऑफ मद्रास ने लॉ बनाया which was to provide reservation in admission for backward sections of the society, backward class of citizen. So where did they get this instruction from the constitution? They were actually referring to Article 46 of DPSP, because Article 46 of DPSP says that what you have to do, you have to promote the economic and educational interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections of the society. So you have to promote economic and educational interest. तो वहां पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और वहां हमने एडमिशन देखा which was given to the backward class of citizen under the law. But yes, the Supreme Court struck it down because at that time there was no such provision which was there in the constitution which would have allowed such kind of an initiative by the state to provide reservation or special provisions in admissions to educational institutions. So what we could see, why? Because they would say that you can't make a DPSP more powerful or greater than the fundamental right, because it violates the principles of equality as understood in Article 15 of the Constitution. So therefore it was struck down. But this is a very, very important article, that is 4646, that you have to remember, because this is the article which was referred by the state of Madras to come up with a law to provide special provisions for reservation in admission into educational institutions for backward class of citizen. Okay? So Article 46, to promote the educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes
and other weaker sections and other weaker sections and other weaker sections, and also to protect them from injustice and exploitation. एक जो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गांधी हमेशा किसी भी इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स या किसी भी तरह के ड्रिंक्स के खिलाफ रहे। यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स जो गांधी को लगता था कि विच इज इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ, गांधी वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट। तो गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत में ऐसी कोई कल्चर हो जिसमें लोग मतलब कोई ड्रग्स का सेवन करे या कोई मतलब रंगीन पानी का सेवन करे जिसमें शरीर की हानि हो। यू नो, गांधी वाज ऑलवेज अगेंस्ट any such intoxicating drinks or drugs. You know, there is a strong influence of Gandhi in so many parts of the country. Like Gujarat always had these prohibition. So Gandhi wanted prohibition as a policy. अब स्टेट तो नहीं कर पाया क्योंकि देखो हम जी तो रहे हैं कैपिटलिज्म में, और कैपिटलिज्म बड़ी क्रूर आइडियोलॉजी है। आपके हेल्थ को चाहे जितना भी नुकसान हो, वो कहेंगे कोई बात नहीं, तुम बेचो, हमें टैक्स दे देना, नीचे में एक वार्निंग लिख देना कि इसका कंजम्पशन आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई गलत काम अगर आप करें जिससे कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी सजा है, लेकिन आप खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप किसी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या किसी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के एडिक्ट हो गए, तो दैट इज गुड फॉर द स्टेट। स्टेट सोचता है कि जितना पिएगा उतना ज्यादा बिकवाली होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा हमें टैक्स मिलेगा। तो पैसा आ रहा है, जब तक पैसा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। Gandhi is completely against this kind of culture, a culture of consumption of these kind of intoxicating drugs or drinks. And so Gandhi is somebody who demands that the state has to prohibit consumption of intoxicating drinks or drugs which are injurious to health. Gujarat is Gandhi's place, so therefore Gujarat will always carry these kind of laws. In the state of Gujarat, there is complete prohibition. आपको वहां शराब की दुकान नहीं मिलेगी, हालांकि थोड़ा सा अलग है वहां प्रोविजन, शराब आप पी सकते हैं, बट होटल्स और इस तरह की जगहों पर वहां पर परमिशन के बाद थोड़ा उपलब्ध करा दिया जाता है। मतलब कंप्लीट एकदम से अम्ब्रेला बैन नहीं है, बट देयर आर सम स्टेट्स जहां पर शराब पीना ही नहीं, रखना भी गुनाह है ना। अगर मान लो आप किसी कमरे में चले गए जहां पहले से शराब रखी हुई है और कोई व्यक्ति उस कमरे को छोड़कर होटल से चला गया और आप चेक इन कर गए और उस आपके जाने के बाद उसमें रेड होता है, तो आप जेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि शराब कौन पॉजेस कर रहा है? आप। उसमें सील भी बंद है शराब में, आपने किसी ने पिया नहीं है, किसी ने खोला भी नहीं है उसको, फिर भी डज नॉट मैटर। पोजेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो अ गुड इनफ क्राइम एंड यू फर्स्ट गो टू जेल, फिर उसके बाद कोई बात सुनी जाएगी आपकी, पहले आप जेल जाएंगे। ठीक है, तो ये गांधी के आइडियाज हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गांधीयन आइडिया विच सेज दैट देयर हैज टू बी अ no consumption of intoxicating drinks and drugs because it causes injury to public health. तो गांधी इस बात पर बड़े स्पष्ट है। तो सरकार इस तरह के नियम तो नहीं ला पाई, सरकार ने कहा हम डीपीएसपी पे लिख देते हैं, अब अगर मन करे तो ऐसा लॉ बना लो, अच्छा है, ऐसा कानून बनाओ जिस राज्य को मन करे, लेकिन कौन राज्य ऐसा रिस्क लेगा? क्योंकि एक ठीक ठाक राजस्व आएगा आपके पास, अच्छा खासा पैसा आएगा, तो नो स्टेट वांट्स टू एक्चुअली एंटर इनटू दिस टेरिटरी। बल्कि कुछ लोग तो इतने होशियार निकले कि इसको और बढ़ोतरी की, है ना, इसमें इस तरह का पॉलिसी लेकर आए कि जिससे लोगों के अंदर पीने की भावना भी खूब बढ़े और सरकार के पास पैसा भी खूब आए, है ना। तो कहा कि भाई एक के साथ एक फ्री, तो क्या चाहिए आपको, है ना, लोगों को तो यही चाहिए। कोई भी चीज जो गलत है ना, उस पर लोगों का ध्यान सबसे पहले जाता है और लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज से। गांधी इस बात को समझते थे। गांधी ने कहा कि नहीं, जो पब्लिक हेल्थ के लिए इंजरियस है उसका सेवन करने की इजाजत सरकार नहीं दे सकती, इसलिए सरकार को इसको रोकना है। ठीक है, तो कुछ ही स्टेट है जहां गांधी की इतनी बात सुनी जा रही है, कुछ स्टेट ने तो 200% सुन लिया और किसी ने लगभग 90% सुना हुआ है। तो दिस इज व्हाट इट इज। सो आर्टिकल 47, अनदर significant Gandhian principle. Article 47, to prohibit the consumption of
टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन वैसे तो अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है रोकना, लेकिन जब हम प्रोहिबिशन, केवल एकमात्र प्रोहिबिशन शब्द लिखे तो समझ जाओ ये बात हो रही है कि शराब बंदी की बात है, ठीक है, कि शराब बंद किया गया, प्रोहिबिशन। टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, intoxicating drinks and drugs which are injurious to public health, which are injurious to health, ये भी लिख सकते हैं injurious to health, बात है, ठीक है। फिर गांधी एक और आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल 48, ये भी गांधीयन है। गांधी अपने इकोनॉमिक जो आइडियाज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, गौ पालन है ना, मुर्गी पालन, एग्रीकल्चर, गांधी इन सबको स्किल मानते हैं। गांधी कहते हैं कि हमें गांव में तो ये सब करना है, तो वी हैव टू प्रमोट दी स्किल्स, है ना। तो गांधी इज बेसिकली समवन हु सेज कि देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ एनी मिल्क कैटल्स, ओके, सो बैन, yes, slaughter of cows should be prohibited. This comes from Gandhi, ठीक है। So Gandhi says that there is to be prohibition on the slaughter of cows, comma, slaughter of calves, slaughter of milk cattles or even drought cattles. So milk cattles तो समझते हैं जो दूध देगा, drought cattles कौन है, जो एग्रीकल्चर में मदद करेगा, ठीक है। तो जो मेल वर्जन है कैटल का, that is called drought cattle, but they aid in agriculture. So Gandhi is basically saying that we should not slaughter. The state has to make laws, ensure that these, species of cows, calves, drought cattles, milk or milk cattles, they should not be slaughtered, and we should work on improving their breeds. हमें उनके breeds को और उन्नत बनाना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। So this was like Gandhi. So ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये सब गांधी के विचार से मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने इसको कहां पढ़ा, किस कैटेगरी में, एज गांधीयन प्रिंसिपल, बिकॉज इवन इन द गांधीयन थॉट वी वुड सी दैट गांधी वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दीस आइडियाज. सो इट इज बिलीव्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड दिस gentleman's compromise that they had with the Gandhians, because Indian constitution was designed largely as a modern nation state with modern rights, and the structures of the state which were very like modern centralized parliamentary structure that we inherited from the British system. And therefore, as a compromise, many of the Gandhian ideas are mentioned in the DPSP, so that it is just an instruction, it is not an enforceable right of sort. So Article 48. Article 48, to prohibit the slaughter of cows, comma, calves and other milk, MILCH, other milk and drought cattles, DRAUGST, and drought cattles and milk and other drought cattles, and to improve their breeds. So state is required to perform these actions. That's what it means, and these are very close to Gandhian ideas. That's why we say these are Gandhian principle. Now liberal ideology, when we say liberal principles, it means that we are talking about the ideology of liberalism. तो लिबरलिज्म की जो कोर आइडियाज हैं, उस आइडिया से मिलते जुलती बातें हम यहां लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा है, वी हैव जस्ट कैटेगराइज्ड एंड क्लासिफाइड इट इनटू दोस प्रिंसिपल्स। तो थर्ड वाले उसमें कॉलम में लिखें लिबरल प्रिंसिपल। सबसे जो प्रोमिनेंट लिबरल प्रिंसिपल, दैट इज लिबरल प्रिंसिपल क्या है, इक्वालिटी, ठीक। तो डीपीएसपी में एक ऐसा स्पेस है, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, एंड दैट इज आर्टिकल 44, दैट इज द स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो वेरी वेरी
controversial but very, very prominent piece of information that we have in DPSP, where the constitution is instructing the state that the state has to try to implement a uniform civil code throughout the territory of India. यानी पूरे देश की टेरिटरी में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश, प्रयास राज्य को करना है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में इस बारे में बात की गई है ना, 44 यूसीसी. और यूसीसी इसलिए क्योंकि हमारे देश में अभी भी 3 ऐसे एरियाज हैं जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, वो डिफरेंट हैं, यानी वो रिलीजियन सेंट्रिक हैं. दे आर नॉट सेक्युलर एंड नाइदर दे आर इक्वल और नाइदर दे आर सिमिलर. वी हैव similar civil laws, we have similar criminal laws. If you do a crime, in crime you will be tried under criminal laws, which means that it is same for everyone. Whether the criminal is from community A, B, C or D does not matter. But on 3 issues, you have different personal laws. That is marriage, divorce, inheritance and adoption. So on these like 3-4 core issues, what you could say is the laws are basically different. Different. Why different? Because it is based on religious scripture. तो ये धर्म के हिसाब से है ना. तो हमें पता है कि हमारे देश में अभी भी सिविल लॉज अलग है, पर्सनल लॉज अलग है, नॉट सिविल लॉज, पर्सनल लॉज अलग है, विच इज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन. धर्म के हिसाब से इसके नियम अलग होते हैं, विच मीन्स एवरीबडी हैज टू ऑब्जर्व दीज मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन लॉज विच आर सेपरेट फॉर सेपरेट कम्युनिटीज, है ना. सो हाउ अ मैरिज is legalized in a Muslim or a Hindu, it will be different based on the laws. How there will be divorce procedure in Hindus and Muslims, it will be different as per the basis of their different laws. So Hindus will have a Hindu personal law, the Muslims will have a Muslim personal law, and that will actually be applicable. So when a case comes to the court about divorce with the Muslim community, there is not single law through which that case will be adjudicated. The judge will have to refer to the Muslim personal law for the adjudication of a issue related to divorce within the Muslim community. That's what it is. So Article 44 says that the state shall strive to ensure, to implement a uniform civil code throughout the territory of India, so that we have equality at all level and we are not creating a society which is basically having differential treatment based on the identity of religion. Okay, that's why we say it's a liberal principle. Article 44, to secure for all citizens, a uniform civil code, UCC, a uniform civil code throughout the country. ठीक है. Another liberal principle is Article 45. सबको याद है क्या लिखा हुआ था? Article 45, पहले तो राइट टू एजुकेशन था वो, अब क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड न्यूट्रिशन between 0 to 6 years of age. Yeah. Article 45, early childhood care and education, early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Complete the age of 6 years. Then Article 48.
Article 48, to organize agriculture and animal husbandry, because most of the liberal country, they have done this. You know, liberal country matlab the developed west, where there was industrial revolution. वहां अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, यू नो, ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. तो इसलिए इस विजन को हम मानते हैं इट्स अ लिबरल विजन, है ना, वेयर द स्टेट शुड आल्सो ट्राई टू डेवलप देयर एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. ठीक है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, on modern and scientific lines. फिर एक 48A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट, and safeguard forest and wildlife, to protect and improve environment and safeguard forest and wildlife. फिर 49 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोगों में ये एटीट्यूड होता है कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स, इस तरह की जगहों पर जाते हैं और मॉन्यूमेंट की दीवार पर एक बहुत बड़ा सा दिल बनाते हैं पहले, और उस दिल को एक तीर से एकदम चीरता हुआ आर पार करते हैं, है ना, और उसके बाद उसमें नाम भी लिख देते हैं, कभी कभी अपना नहीं दूसरे का लिख देते हैं, है ना, जस्ट फॉर फन. तो इस तरह के लोगों के लिए एक आर्टिकल डीपीएसपी ने लिखा और उसने ये कहा कि देखो, राज्य को क्या करना है, राज्य को ऐसे मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, उसको प्रोटेक्ट करना है. मतलब आर्टिस्ट बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको कहिए कि इस तरह का आर्ट अपने किताब में दिखाएं. कम से कम जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं विच आर वेरी रेलिवेंट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इंश्योर दैट दे शुड बी प्रोटेक्टेड. तो हाउ टू प्रोटेक्ट देम? तो यहां लिखा 49 में कि वी शुड डिक्लेयर देम एज प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, है ना, इस तरह के इंटरफेरेंस से. ये लिखा हुआ नहीं है, बट ये समझ के लिए है कि सरकार को क्यों अपने संविधान में ये सब लिखना पड़ा, क्योंकि सरकार भी सब कुछ देखती थी, है ना, और उस समय हो सकता है लोग और भी कुछ विशेष तरह के शौक रखते हो. तो you have to protect monuments, you have to protect those places which are of historical importance, and for that you have to declare those places as places of national importance, so that you could be able to develop, or you could be able to protect those places of historical importance from being violated, you know, from being dirtied, you know. So you have to ensure that they are kept in their pristine glory, they are kept intact in terms of non-interference by these sort of miscreants. Okay, so 49, to protect monuments, places and objects of historical importance, which are declared to be of national importance. Then we have another instruction, again very liberal, because in liberal societies we focus on division of power. So Article 50 says, 50, separation of judiciary from executive. Separation of judiciary from executive.
separation of judiciary from executive. आर्टिकल 51. अगर आप लिबरलिज्म को देखेंगे तो लिबरलिज्म इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन वर्ल्ड पीस. You know, it's the ideology which says that if you can cooperate, you can have world peace. That's why the liberal ideology built League of Nations, because we thought that if we can have a platform where we can come discuss issues, there will be no war. And this ideology of liberalism created the idea of United Nations organization, because we think that if you have a UNO where you have a platform where everybody who has a problem with each other, they have this platform, they can come, they can discuss their issues, and it can lead to world peace. So now 51 is actually about that, because it says that the state has to promote international peace, security, and you have to maintain an honorable relations among nations. तो इसलिए इसमें यह लिखा गया है कि हमारे स्टेट को क्या करना चाहिए. You have to foster respect for international rules, for international regulations, for international treaty, for international agreements, for international law, है ना. And you have to encourage settlement of international disputes by peace. यानी हमको कैसे करना है, आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करो, लड़ाई से नहीं, आर्बिट्रेशन. विल डिस्कस, नेगोशिएट एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व आवर लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट. ये भी लिखा हुआ है. जैसे भारत अभी क्या कह सकता है, भारत ईरान को आर्टिकल 51 को सॉफ्ट कॉपी भेज सकता है, और इसी सॉफ्ट कॉपी को वो डोनाल्ड ट्रंप को भेज सकता है. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही पढ़ रहे होंगे, बट और फिर भारत ये कह सकता है कि देखो कम से कम सीखो कि हमें क्या करना है. वी हैव टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज, वी हैव टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यू हैव टू फॉस्टर पीस एंड सिक्योरिटी, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू सॉल्व योर डिस्प्यूट्स नॉट बाय वायलेंस बट बाय आर्बिट्रेशन. और हम तैयार करेंगे, हम करेंगे सब चीज, है ना. दिल्ली में आओ, दोनों बैठो यहाँ, ठीक है, और हम आराम से बातचीत करके नतीजा निकाल सकते हैं. अब एक ऐसा देश है जिसने कहा कि हम सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. उस देश के साथ दिक्कत क्या है कि अभी तक उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया इजराइल को, और वो डील करा देगा. यानी ऐसा देश जो आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा पाया, वो एक डील करा देगा कि इजराइल अब हमला नहीं करेगा ईरान पर, और ईरान अब हमला नहीं करेगा इजराइल पर, है ना. तो ये क्या जबरदस्त, मतलब एक होता नहीं, कुछ लोगों को अपने ऊपर बड़ा खुशफहमी होता है, या गलत फहमी होता है. तो ये गलत फहमी का एक हाइट है ना, जो कितना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है. मतलब उनको अभी भी लगता है कि दैट दे आर सो सीरियस कंटेंडर्स इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कि वो कुछ बात बोलेंगे और लोग उनकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना. इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वही देश एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करता है विद सऊदी अरबिया, और उस पैक्ट में लिखा होता है कि अगर हमारे देश पर हमला हुआ तो उसे हमारे धरती पर हमला माना जाएगा और हम उसमें इंटरफेयर कर जाएंगे. इसका मतलब हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमारा ध्वंस रहेगा इस एरिया में. साउथ अफ्रीका के ऊपर, सऊदी अरबिया के ऊपर एक बढ़िया सा मिसाइल से हमला किया उन्होंने, जो न्यूक्लियर पावर अभी है भी नहीं, हमला कर दिया. और इन्होंने क्या कहा, अब ये भी नहीं कह सकते प्रूफ दिखाओ, क्योंकि अगर इनके यहां हुआ होता तो ये तो अपने यहां एक वीडियो बना के बता दिए कि ये हमला हमारे यहाँ नहीं हुआ, ये हमला तो हमने उनके यहाँ किया था, और जो हमारे यहाँ का दृश्य है वो दिखा देते कि उनके यहाँ हुआ था. अभी तो कुछ नहीं कर पाए, बट उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे, अपील करेंगे कि शांति हो जाए. यानी ना ही आपका सिक्योरिटी पैक्ट काम आया, फिर आपने कहा कि आप मध्यस्थता करा देंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आपको ज्योग्राफिकल टेरिटरी बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पर मिली है ना. और किसके बीच में करा देंगे, ऐसे देश के बीच में जिसको अभी तक आप रिकॉग्निशन ही नहीं देते. मतलब आपका उनके साथ कोई रिकॉग्निशन नहीं, आपका कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं, कोई डीलिंग नहीं. उस देश का कोई व्यक्ति आपके देश में आएगा नहीं. जब नेगोशिएशन होगी तो देश में कौन आए, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स लेवल के लोग आए और अपना आए, बैठे, इसको कहते हैं डेफ मैन टॉकिंग. यानी सबके कान में ठेपी लगा हुआ था और उन्होंने आपस में बात की, उठ के सब चले गए और नेगोशिएशन हो गया. लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान ये कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन है स्टेट को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी डिस्प्यूट हो विच इज इंटरनेशनल डिस्प्यूट फॉर अस, यू हैव टू रिजॉल्व इट बाय आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन. हम आराम से
आर्बिट्रेशन से, नेगोशिएशन से उसको रिजॉल्व करें. वी शुड नॉट रिजॉल्व इट बाय एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस. हम वायलेंट ना हो इन सब चीजों के लिए. दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली सी. लिखिए. Article 51. It guides India to maintain or to promote, sorry, it guides India to promote international peace, comma, maintain just relations with nations, and comma, respect international law, and encourage arbitration of disputes. ठीक है. So this is our general classification that we see between FR and DPSP. तो फंडामेंटल राइट्स के भी क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP. ठीक, इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए. यू नीड नॉट बाय हार्ट ऑल दिस, यू जस्ट नीड टू नो सम ऑफ द मेजर आर्टिकल्स स्पेशली विच आर ऑफ सम रेलिवेंस. एक दो बार हम डिस्कशन करेंगे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वी विल हैव अ डिस्कशन एज वेल. ठीक. नाउ द अदर टॉपिक इज रिलेशंस between fundamental right and DPSP. So what is the relationship of fundamental right and DPSP? और बेसिकली मैं यहां आर्ग्यू कर रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यानी what is the nature of conflict between fundamental right and DPSP. So to read that, we just have to follow the same sort of ideas that we have read in the amendability part, where we have read most of the cases concerning fundamental right and DPSP as well. So we just have to find out that how did the judiciary look at the relations between DPSP and fundamental right, and how did they define that relationship. कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या दोनों बराबर हैं, या कोई DPSP कुछ फंडामेंटल राइट से बड़ा है, यानी ये हमको जुडिशियल जर्नी में समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन फेजेस. एक बात बहुत स्पष्ट है, फ्रॉम 1950 ये हमारा फर्स्ट फेज होगा. इस फेज में तो बहुत स्पष्ट किया कोर्ट ने 1966 तक, जब तक गोलकनाथ नहीं हुआ. गोलकनाथ कब होता है? 1967 में. इसलिए 66 तक ये हमारा पहला फेज है. इस फेज में कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा, क्या कहा कि डीपीएसपीज आर सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट. और बेस्ट केस क्या है? चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. क्यों उस एक्ट को null and void घोषित किया? Because state of Madras was using article 46 and court said that DPSP is subsidiary or subordinate to fundamental right. So to implement a directive, you can't override, bypass the fundamental right of the Indian Constitution. So relationship is very clear in the first phase, which says that DPSP are subsidiary or subordinate to the fundamental rights. तो फिर बड़ा कौन है? Fundamental rights, because they are subsidiary or subordinate to fundamental rights. और कौन सा केस का जिक्र किया मैंने? कौन सा एग्जाम्पल कोट करेंगे? चंपाकम दोराईराजन वर्सेस
State of Madras, 1951. So that was the interesting case that we need to know. Why? Because in this policy, what was inspired? This policy of reservation in this case was inspired by Article 46, and court made it very clear that this was violative of Article 14 and Article 19, and therefore the court said that any DPSP cannot bypass a fundamental right because DPSP runs subsidiary to fundamental rights. ठीक है? The Supreme Court invalidated the reservation policy for backward caste in educational institution. Full stop. The policy was inspired by Article 46, of the Constitution. Forty-six क्या है? DPSP है. 46 of the Constitution. The court ruled that DPSP runs subsidiary to the fundamental rights. तो पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है? What is the response of the parliament? First CA and 17th CA 1964. That's the parliamentary response. तो पार्लियामेंट ऐसे लिख लो, पार्लियामेंट्स रिस्पॉन्स, फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th CA. All of them were actually made at different points of time, which was related to these particular provision of providing reservation, okay, to scheduled caste and scheduled tribes. तो फर्स्ट कब हुआ था? 1951 में था, ये हुआ था 1955 में, और ये हुआ था 1964 में. ये अलग अलग अमेंडमेंट्स इस टाइम पे हुए थे. Second phase is 1967 to 1971. Second phase 1967 to 1971. इस फेज में क्या है? बहुत क्लियर है. गोलकनाथ केस है आपके पास. क्या कहा कोर्ट ने? to amend what? Fundamental right. It means what? It means fundamental rights are sacrosanct. आप उसको टच भी नहीं कर सकते है. तो इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि फंडामेंटल राइट तो सबसे सुपीरियर है. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन से सबसे सुपीरियर कौन है? फंडामेंटल राइट. तो फिर डीपीएसपी से भी सुपीरियर कौन है? फंडामेंटल राइट. तो इस फेज की क्या हुई कहानी हमारे पास कि फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर टू डीपीएसपी. सुपीरियर है फंडामेंटल राइट, सुपीरियर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और केस का एग्जांपल कौन सा देंगे हम? गोलकनाथ केस है ना. तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967.
1967. In this case, fundamental rights were held. In this case, fundamental rights were held sacrosanct, SACROSANCT, sacrosanct or non-amendable. So the court held the supremacy of fundamental right. और कैसे इसको किया कोर्ट ने? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नॉन अमेंडेबिलिटी, है ना. सो द कोर्ट हेल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स in terms of its non amendability, or on the basis of its non amendability. अब आया एक फेज जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि some fundamental right can be made inferior to implement some directive principles of state policy. That is 39B and C can be implemented even if it contravenes the provisions mentioned in Article 14, 19 and 31 of the Indian Constitution. यही कहा था कोर्ट ने. तो इसको कहा जाता है, यानी ये कब तक चला? 1972 to 1975, क्योंकि बाद में इन्होंने 76 में क्या किया, इसको ऑल डीपीएसपी कर दिया था. इसलिए तीसरा फेज है, इसको हम कहते हैं फेज 3, and this phase is the phase of co-equal relationship. This is what we say, phase of co-equal relationship. That is fundamental right को amendment की गुंजाइश दे दी ना. Fundamental right can be amended to implement DPSP. ठीक है. और बेसिकली अमेंडमेंट इसको हम ऐसे समझते हैं कि फंडामेंटल राइट तो सुपीरियर था अब तक, लेकिन अब उन्होंने ये मान लिया कि 25th CAA 1971 ने क्या कहा कि 39B and 39C they will be superior to 14, 19 and 31. ठीक है. So that's why this is a phase where the parliament was basically doing this. They were saying that, ये जुडिशरी ने नहीं कहा, जुडिशरी तो अभी बोलेगा उस पर इन्होंने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट can be amended if you want to implement certain directives. Okay? और एक बात और लिखी थी उन्होंने, जो जुडिशरी ने कहा नल एंड वॉइड है. जुडिशरी ने इसको तो ठीक माना केशवानंद भारती में, पर इन्होंने एक और शब्द लिखा था, ये लिखा था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. यानी एनी लॉ विच इज टू गिव इफेक्ट टू 39B and C, पहली बात तो ये कही कि इट कैन वायलेट 14, 19 and 31, और दूसरी बात इन्होंने लिखी कि it cannot be judicially reviewed. और देखो इसका फेज में एज क्या है अभी, व्हाट इज द एज हियर. एज मैंने क्या लिखा है, कब तक गया ये, दिस इज द फेज ऑफ 71. तो अब हमारे पास इसका जुडिशियल रिव्यू आता है कि क्या ये ठीक है या गलत है, उसको हम अगले फेज में देखेंगे. So this is the phase 71 तक हमारे पास जो फेज है उसमें यही होता है. So basically this is a phase which talks about 19 एज नहीं लिखा है ना मैंने, सॉरी. इसमें क्या लिखा है, कहां तक लिखा है ये 79.
पीछे में कितना लिखा है 71 थे, अच्छा हाँ तो ये उससे आगे हो जाएगा ना, विच मीन्स इसमें हमारे पास केशवानंद भारती आ जाएगा 75, ठीक है, फेज ऑफ को इक्वल रिलेशनशिप। तो ये लॉ बना, और मैंने ऊपर क्यों लिख दिया फेज ऑफ को इक्वल रिलेशनशिप, क्योंकि केशवानंद भारती में कोर्ट ने इस बात को ठीक माना, कोर्ट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, कोर्ट ने केवल इसको कहा दिस इज नल एंड वॉइड, ठीक है। तो इसलिए फिर हुआ केशवानंद, हमारे पास एग्जाम्पल है, ये तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, फिर हमारे पास आया केशवानंद नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. And what did the court say here? Very interestingly, the court said that yes, 25th CA is fine, but this part of the law is invalid, है ना? So court validated 25th CAA 1971 partially, है ना, पार्शली। तो किसको वैलिडेट किया, वैलिडेट किया कि 39B और 39C कैन बी सुपीरियर टू 14, 19 एंड 31, बट struck down the portion of the law which dealt with the non-judicial review of such a law, ठीक है। तो उसको कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इलीगल है, ये ठीक है बट दिस इज इलीगल। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अ फेज ऑफ को इक्वल रिलेशनशिप। क्यों कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसी जजमेंट में कोर्ट ने यह कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड, दैट्स द पॉइंट, ओके। नाउ वी हैव द फोर्थ फेज इज बिटवीन, so you're just revising the different laws that you have already read. So you're talking about the fourth phase. फिर से रिलेशनशिप देख रहे हैं 1976 से 1979, ये सबसे खराब फेज है, बिकॉज इन दिस फेज हाउ इज द रिलेशनशिप चेंज्ड, which amendment has come, 42nd CAA 1976, and in this amendment one of the very controversial provision was that any DPSP can violate 40, 19 and 31, which means if the government wants to implement any DPSP, any directive mentioned under part 4 of the constitution, and in implementing those directives, if the law violates article 14, 19 and 31 provision, then this will not be declared null and void. So what does it mean? It means that you have drastically changed the constitution. The constitution is never written with the intention to make DPSP superior and fundamental right inferior, or rather fundamental right superior and DPSP inferior. That's true, but the constitution has a balance. The constitution has put forward the balance, which means the constitution has also put forward the relationship, that what is fundamental right and DPSP's relationship, what kind of relationship exists between the two. And you know that in terms of relationship, it is very clear that fundamental right and its provisions are enforceable, so they enjoy a certain level of legal protection, which DPSP do not. So if you are changing that attitude through the amendment, and you are saying that even if we implement any of the directives, then these fundamental rights violations can be considered as legal, then the court will have to actually speak over this issue, because this was a big change in the relationship as understood or conceived in our original constitution. तो इसलिए हम इसको कैसे समझेंगे, फिफ्थ फेज में समझेंगे. फिफ्थ फेज इज मोर अबाउट 1980 टिल डेट, यानी इट्स एन ऑनगोइंग फेज. और इसमें कोर्ट में हम किस कोर्ट को, केस को कोर्ट करेंगे,
मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980. And in this case, what did the Supreme Court say? They said that fundamental rights and DPSPs are complementary to each other. And Supreme Court also said that the amendment which you have done in Article 31C, ये कहाँ लिखा हुआ होता है? 31C में लिखा होता है ना, 39B and C is greater than. तो ये मैंने कहाँ लिखाया था? You added a new clause, 31C. And 31C says that if you are to implement the directives mentioned under 39B and C, and if it contravenes any of the provisions mentioned under 14, 19 and 31, then it cannot be considered null and void. ऐसे लिखा हुआ है, मैंने उसको बस फिगर में समझा दिया. तो 31C की लीगैलिटी की बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि this 42nd amendment at 31C is unconstitutional because it disturbs the balance between DPSP and fundamental right. Okay, and court said that what is valid? The original 31C. So court restored the original 31C of the Indian Constitution. तो इस फेज में जो सेंटेंस लिखना है वो लिखिए, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर complementary to each other. Fundamental rights and DPSP are complementary to each other. Next point, the Supreme Court declared 31 clause C as amended by 42nd CAA 1976, as amended by 42nd CAA 1976 as unconstitutional, because it affected the balance between part 3 and part 4 of the Indian Constitution. Part 3 and part 4 of the Indian Constitution. Therefore, the court restored original state of 31 clause C as interpreted in KBC, Keshavanand Bharati case. फिर आया एक बहुत प्रोमिनेंट डॉक्ट्रीन जिसका नाम है दी डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस construction. Okay, and the decision on this issue comes when the Supreme Court is actually looking at a case which is on the Kerala Education Bill. So वहां पर एक डॉक्ट्रीन सुप्रीम कोर्ट लेकर आती है और वो बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रीन है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है हमसे कि if you have to look at the DPSP part, then you should actually know that the DPSP has to be constructed or conceived in harmony with fundamental rights. So there is no fight between DPSP and fundamental right. Whenever we will have a question before us where we are looking at the two parts of the Constitution, part 3 and part 4, then we have to first try and make attempt to interpret the two in harmony with each other. So we can't actually pit one versus the other or one against the other. That's the scope of fundamental rights
and DPSP was defined by the court in this particular case. बहुत इंटरेस्टिंग है ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट ने यहां पर ये कहा कि फंडामेंटल राइट एंड डीपी डू नॉट हैव कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस. We should not look at them as if there is an inherent conflict. There is a vision of the Constitution. The Constitution wants to ensure political democracy through fundamental right. They want to attain social and economic democracy through DPSP. So inherently, there is no conflict between the two ideas. Those two ideas, neither of them are superior or inferior. A country would require both these ideas for its progress. As a nation, we require that we have to strengthen fundamental right. We have to also strengthen part 4 of the Constitution. That's why they said that together they are very important for a modern democratic state like India. So, court said that whenever there is a question that comes to us with regards to conflict between the two, we should try our best to reconcile them. हमें कोशिश ये करना है कि we have to give effect to both the provisions in a manner which is more reconciled. यानी हम दोनों को reconcile करके दोनों के provisions को effective बनाने की कोशिश करें. That is, provisions are to be interpreted in a harmonious manner. We should not interpret the provisions as if we are interpreting something which is one versus the other, and we have to establish one's superiority versus the other. We have to ensure that we interpret these ideas in such a manner so that when they are interpreted with the notions of creating a harmonious construction between the two interpretations. So whatever we interpret, we should not look at a conflict between the two. We should try to interpret any conflictual clause also with, at best, how much we can reconcile, so that if it is implemented, both provisions should be implemented. So we should not pit one against the other. ठीक है, और हम ऐसे करें so that the overall intention of the law is also fulfilled. तो कोर्ट ने एक बहुत significant idea हमें समझाया, इसको हम कहते हैं the doctrine of harmonious construction, ताकि जब भी fundamental right और DPSP के cases आए on the issue of conflict between the two, we just have to apply this doctrine which the courts have said that we have to interpret them harmoniously and try our best to ensure that both provisions are implemented instead of pitting one against the other. ठीक है, देखिए केरला एजुकेशन बिल केस 1957, केरला एजुकेशन बिल केस 1957. The court used this doctrine. The court used this doctrine to enhance and expand the scope of fundamental rights and DPSP. Fundamental rights and DPSP. It ruled that there was no inherent conflict between the two and they together constitute an integrated scheme and a comprehensive administrative and a social program for a modern democratic
democratic state. Next point, the court ruled that whenever there is a conflict between the two, the court should reconcile them. And give effect to both provision that is the provisions are interpreted in a harmonious, इसको अंडरलाइन कर लेना, interpreted शब्द से अंडरलाइन कर लेना, are interpreted in a harmonious and consistent manner, so that the overall intention of the law is fulfilled. So now there is one DPSP, as I've said, that I'll be discussing also with you, which is about the issue of Uniform Civil Code, because Uniform Civil Code पे एक बार सवाल पूछ लिया जब इस पर डिस्कशन हो रहा था, और क्योंकि ये डिस्कशन ऑनगोइंग है और ये माना जाता है कि the party which is in power or the ideology which is in power, they had three major goals, political goals. One was, it said that they want to abrogate Article 370. So it's done. They have also said that one of the goal is that they would be constructing a Bhavya Ram temple in Ayodhya. So they have done that. The third goal of the party was, of the ideology was, from the Jan Sangh days, that they will be implementing a uniform civil code in the country. इस देश में सबके लिए समान नागरिक संहिता लगेगा, यानी सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज एंड इवन पर्सनल लॉज, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब एक जैसा होगा. सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज एक जैसे, इज ओनली डिफरेंस ऑफ अ पर्सनल लॉ. पता है था अभी. तो इसलिए ये माना जाता है कि देर सवेर दिस वुड बी डेफिनेटली इन द गवर्नमेंट्स एजेंडा, एंड यू कुड एक्चुअली सी efforts the government will make in this direction as well. Maybe not now, but in near future for sure. And if it is done within a year or two, then definitely it can be a part of your examinations question. So we should try to appreciate the debate right now, that how we are actually looking at the Uniform Civil Code debate, on what aspect we are looking at the debate, on what aspect we are constructing this debate. You know, I think there was an article by Faizan Mustafa just 2 days back, and he was making an argument on certain issues of Uniform Civil Code, which means he was basically raising some issues with regards to Uniform Civil Code and how it could be implemented, in the sense that if it is implemented, then how do you actually look at the questions which might be a problem in the Hindu Civil Code as well? Because in Hindu Civil Code, he was saying that it allows that anyone who can will and can give this property to one person. So suppose you have 3 children, and under the Hindu Succession Act, if the parent has made a will, they can actually bequeath all their property to even one child also. अगर will में लिख दिया तो सब उसका हो जाएगा. इसलिए ध्यान रखना है कि कम से कम अपने पेरेंट्स को इतना दुखी मत करो कि जब असल समय आए तो वो, है ना,
तुम्हारे भाई बहन को सब कुछ दे दें और उसमें लिख दें कि मतलब जालिम सिंह को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना है ना। तो कोशिश करना है कि you be a nice daughter or son, whatever it is, you fulfill your duties, responsibilities. बाकी ऐसे बहुत कम केसेस हैं जब पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मतलब कितने भी आप जालिम सिंह हो लेकिन पेरेंट्स फिर भी बहुत, उनका दिल बड़ा है। लेकिन अब जमाना देखो बदल रहा है और इस तरह की चीजें हमारे सामने है, तो ध्यान रखना है। वहीं दूसरे पर्सनल लॉज में, जैसे उन्होंने हवाला दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ में, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह है दैट इक्वल प्रॉपर्टी विल नॉट बी शेयर्ड विद द डॉटर, बट ये नहीं है दैट if the parent that he wants to bequeath all the property by signing a will to anyone who is even not their son or daughter. I mean, that cannot happen. In Hindu Succession Act, this can happen. So he was basically raising a very pertinent point. He was basically saying us that if there is a uniform civil code debate in the country, then what we should do is we should try to reform the best. We should try to reform all the codes so that we have one uniform code which is like a very prominent code, best code that may be agreeable to all party concerned. Okay. So first let us try to understand this issue here. Uniform Civil Code कहाँ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 44. So 44 ये कहता है that the state shall endeavor to implement a uniform civil code throughout the territory of India. So it's a DPSP policy, and it says that the state shall endeavor to implement a uniform civil code throughout the territory of India. Okay, that's what the Article 44 tries to say. What we are talking about here is we are talking about पर्सनल लॉज हियर. हमारे देश में जो कंटेक्स्ट है वो क्या है? ये पूरा यूसीसी पर्सनल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है. पर्सनल लॉज क्या क्या है, कौन से एरियाज में है? 4 एरियाज में. क्या है? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन. और ये जो पर्सनल लॉज है इट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी based on religion, which means personal law varies from community to community because it is based on religious laws. ठीक है. So we should know that we are talking about this personal laws which is different because it varies from community to community. Here religion community की बात कर रहा हूं मैं, religious community to religious community. Why it varies? Because it is based on religious laws which is actually different in different religious community. So we have similar civil and criminal law but we have different personal laws. Now if you remember in 1835 the British started the exercise of codification of laws in India. और उस वक्त ब्रिटिश ने क्या किया? They recommended for similar civil and criminal laws, but they also recommended that we should not interfere with the personal laws of the communities that lives in India, because they did not want to interfere with the religious practices in the country. They thought that this might enrage the masses. So we have one reference, ये हम पढ़ चुके हैं in the historical evolution, but फिर भी यहां पर भी हम एक बार इसको लिख लें कि 1835 का जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए कमिटी बना था उसने क्या सिफारिश की. सो ब्रिटिश स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इन इंडिया एंड व्हाट डिड द कमिटी से? इट रिकमेंडेड फॉर similar civil and
criminal law, but it also recommended not to interfere with the personal laws of the community. Okay, so personal laws of the community. Just for the understanding that what was Constituent Assembly debating on this issue, so there are very interesting observations made by some prominent members of the Constituent Assembly. It will give you an idea that why this issue is a bit controversial. So we'll just look at the Constituent Assembly डिबेट्स. संविधान सभा के डिबेट को देखते हैं एक बार. संविधान सभा डिबेट कर रहा है इस विषय को, और आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यूसीसी इज गुड फॉर मॉडर्नाइजेशन. अगर हमें भारत को मॉडर्न स्टेट बनाना है, मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना है, तो यूसीसी इज क्रूशियल. सो यूसीसी इज crucial for two things. Even for national unity, because if you don't have a UCC, then what problem you might face? You might face with the problems of unity in the country, because it still tries to give you an hint that you are being inhabited by different communities in India. So laws will actually be applied on them, but that will be different. So there is a element of difference that will still persist in the society. So India wants a unified nation because, there are enough problems that India has witnessed already. Demand of separate state in the form of religious identity, and therefore for national unity, UCC is very integral, very important. Plus he says that UCC is also important because we will be able to modernize the personal laws of different communities. Sometimes those personal laws may be very old. That might be relevant in some, medieval era or some other era, but it might not be so relevant in today's era. So we also need to modernize the society. We need to keep pace with the progress that communities make, society makes. So K.M. Munshi is basically giving us the idea, K.M. Munshi कह रहे हैं ये बात, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, UCC is very integral for national unity and modernization of India. Okay. Now, then there are some Muslim members like Ismail Khan. ये दूसरा नाम है. तो मैं कॉन्ट्रास्ट आपको दिखा रहा हूं कि उस वक्त हो क्या रहा है, मतलब ये डर क्या है इस यूसीसी का. तो इस्माइल खान सबसे पहले कहते हैं कि एक प्रोविजो उसमें डाल दीजिए यूसीसी में कि माइनॉरिटीज वुड नॉट बी ऑब्लाइज्ड, दैट इज द कम्युनिटीज विल नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू गिव अप देयर पर्सनल लॉज. आप कह दीजिए कि state should endeavor to implement a uniform civil code throughout the territory of India, but add another proviso there. उसकी proviso next क्या लिखिए कि minorities or any communities should not be obliged to give up their personal laws, ताकि हम अपने अपने personal laws में ही उन चीजों को देखें और उसका अनुसरण करें. We don't want to give away our personal laws, so add these proviso. This is coming from Ismail Khan. Then we have Alladi Krishna Swamy Iyer. Alladi Krishna Swamy Iyer. Okay. So Alladi Krishna Swamy Iyer. What he says is also very interesting. He is basically saying that the basic purpose of UCC is just unity, because UCC wants to eliminate difference that might exist among or between communities. Therefore, UCC should be, part of the constitution. It should be implemented. Okay. So what you see from this debate, हालांकि और भी है इसमें डिबेट में लोग शामिल हुए,
There are so many other people who have made their observations. I just want to keep it simple, short, just to give you a sense that people who were speaking and who were non-Muslims, they saw UCC as more like a tool of modernization, tool of creating a more unified India. So through UCC, you could create a more united India. That was what they were saying. But if you look at the other side of the debate, if you were a Muslim member, especially people like Ismail Khan, Poker Sahab, who spoke on this issue, they thought that UCC would unduly interfere with their personal laws and would impede them to practice their personal laws. And therefore, they were skeptical about this idea called a UCC. That was what we saw in the Constituent Assembly debate, or that is what we could actually gauge the mood in the Constituent Assembly debate. So you have to keep in mind that UCC is a controversial issue, because the moment you say UCC, it somehow creates an impression in the minds of certain sections or communities in India where they think that now some of their personal laws and practices might be endangered in the name of UCC. Or rather, they might think that through UCC, what the state is going to do is they are going to implement a Hindu code which would be applicable on every other religious communities. So this is the controversy. This is the problem that a UCC constantly faces. ठीक है? K. Munshi. क्या कहा उन्होंने? K. M. Munshi. UCC is integral to national unity and modernization. UCC is integral to national unity and modernization. Ismail Khan. अभी 8 नहीं बजा है, समझाओ उसको. National unity and modernization. Ismail Khan. He opposed UCC. He opposed UCC and asked, Ismail Khan, he opposed UCC and asked that a proviso, P-R-O-V-I-S-O, a proviso should be added declaring that communities should not be obliged to give up their personal laws. A. Krishnaswamy Iyer. He said that the aim of UCC was to achieve unity and amity by removing factors that contributed to differences among the communities. फिर एक हेडिंग लगाओ जिसमें कुछ पर्सनल लॉज के नाम हम लोग लिख लेते हैं. पर्सनल लॉज इन इंडिया. फर्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. 55 इसलिए है क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है, इट वाज बेसिकली पास्ड इन द 1950s. सो देयरफॉर
हिंदू के जो लॉज हैं दे आर रिफॉर्म्ड, विच मीन्स इंडिपेंडेंट इंडिया हैज रिफॉर्म्ड वन laws, one code bill that was Hindu. So that's why we have this 50s वाला डेट आपको ज्यादा दिखेगा. हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया था 2005 में, वो लिख ले अमेंडेड इन 2005. ठीक है, क्या किया गया कि जो हिंदू डॉटर्स थे they became equal inheritor of their ancestral property. ठीक है, अभी बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि आमतौर पे जो भाई हैं वो बहन के पास जा रहा है और उनसे साइन करवा रहा है कि उनको प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए. Why? Because the sister thinks that if she will claim her rights, then maybe she will lose her मायका, है ना. तो मायका जाने का दरवाजा बंद हो जाएगा, है ना. यानी भाई और भाभी जो है थोड़ा सा नाखुश हो जाएंगी, तो फिर मतलब अगर उनको कभी इच्छा भी हुई जीवन में तो कहाँ जाएंगे, है ना. तो इसलिए मायका बना रहे, तो इसलिए हमें थोड़ा त्याग करना है. लेकिन कुछ हैं जो स्पष्ट हैं कि भाई हमारा अधिकार है, हमको मिल गया है और हमको वो चाहिए. हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, प्रॉपर्टी की जरूरत है, और क्योंकि अब अधिकार है तो है. ठीक है, पिताजी ने तुम्हारे लिए भी कम नहीं किया, अब तुम नालायक निकले तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है. ठीक है, तो तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी क्यों मिलेगी, अब इक्वल शेयर है. और देखो, अगर ध्यान से देखा जाए रैशनली, तो एवरीबडी शुड गेट एन इक्वल शेयर. आई मीन, व्हाई शुड समबडीज फैमिली शुड नॉट बी गिविंग अ शेयर टू द डॉटर्स? आई मीन, दे आर ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ द फैमिली. Now, if a male child has a claim over the property, their ancestral property, then only on the basis of gender, you can't say that you don't have a share in the property, because as per the rules, you are married to somebody else's house. So marriage तो चलो ठीक है, it's an institution, so you are married, but property is property. ठीक है, भाई को ही बेच देंगे, ठीक है, तुम ही दे दो पैसा इसका, मार्केट से 20% का डिस्काउंट. So you can still think about it, because as far as the Indian state is concerned, they have amended the law in 2005, and now you have on every ancestral property, your rights are equal as your brothers, which means the female child in the Hindu family will have equal inheritance rights like her brother. So if your brother is inheriting 10 acre, then you will also inherit 10 acre. 9.5 एकड़ भी नहीं, एकदम 10 एकड़ पूरा. ठीक है, ध्यान रखना है. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अमेंडेड इन 2005. ठीक, फिर थर्ड, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956. हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956. ठीक है, these are like Hindu laws. That is marriage, divorce, that is about succession, that is about guardianship. Yani if you are adopting someone, guardianship. फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, जिसको शरीयत पर्सनल लॉ भी कहते हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937. नेक्स्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936. पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936. फिर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1932. इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1932. इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1932. और बहुत सारी मैरिजेस ऐसे होती हैं विच इज इंटर रिलीजियस, तो ऐसे केसेस में कौन सा एक्ट लगता है? स्पेशल मैरिज एक्ट, है ना. तो अगर आप मतलब अंतर धार्मिक विवाह कर लेते हैं तो उसमें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन के लिए आपको एक अलग से लॉ है जो ना आपके धर्म का है ना दूसरे साइड के धर्म का है. वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके तहत ये डिसाइड होगा दैट व्हाट विल बी
the take of the state on the issue of divorce, inheritance, maintenance, कुछ भी बातें हो, Special Marriage Act will actually do the needful. Special Marriage Act 1954. Special Marriage Act 1954. अच्छा, हमारे देश में जब भी यूसीसी की बात होती है तो there is only one state for a very long time which did not have different personal laws in that state. That was Goa, or that is Goa. Because Goa was not an Indian territory when we became independent. So Goa becomes Indian territory only in 1961. यानी गोवा कब बना हमारा टेरिटरी? 1991. हाँ, तो गोवा is like joining the territory very late. So Goa is a territory of Portugal. It's a Portuguese territory. तो पोर्तुगीज टेरिटरी में वहां पर एक पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 ये गोवा में एप्लीकेबल था. यानी गोवा के पास पोर्तुगीज शासन के दरमियान एक सिविल कोड था जिसके आधार पर जो भी गोवा की टेरिटरी में रह रहा था उसके पर्सनल लॉज इस सिविल कोड से तय होते थे. यानी अंग्रेजों की तरह पोर्तुगीज ने पर्सनल लॉज को छोड़ नहीं रखा था. पोर्तुगीज had made a Portuguese Civil Code 1867 which was implemented in Goa, which was basically effective in Goa. Now Goa joins India in 1961, becomes India's territory. Shuru mein Goa was a union territory. Now when Goa joins India, Goa joins with the 1867 Portuguese Code. So this 1867 Portuguese Code is still effective in Goa. So Goa becomes the first territory in India where there is a one civil code which applies on everybody equally, which means you will not be seen and you will not be given marriage, divorce, inheritance, succession, legal problems with your partner in terms of your personal codes. You will be tried in Goa with the 1867 Portuguese Civil Code. That is what I want to say. So गोवा में applicable है 1867 Portuguese Code और वही civil code आज भी गोवा में applicable है. That is why we say that Goa has like India's first uniform civil code. जब भी बात होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कितनी परेशानी हो सकती है, सो गोवा इज अ क्लासिक एग्जांपल टू डिमॉन्स्ट्रेट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई परेशानी नहीं हुई आज तक गोवा में. एंड यू विल नॉट हैव सीन दैट गोवा there had been some demonstrations, some dharnas, some demands that this uniform civil code in Goa should be abolished and they would want to be, they would want to be ruled by the effectiveness of their respective religious personal laws. So Goa is that example and therefore we will try to see, हालांकि गोवा का भी जो सिविल कोड है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, but as of now what I'm just trying to understand, what you should understand is that Goa is that state in India, that territory in India that still has one law only for in the name of civil code. And this law, whatever is written over there, it operates on everyone in Goa on the basis of equality. तो अगर लॉ में कुछ थोड़ी बहुत किसी जाति को किसी धर्म को अगर उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन दिया है तो दैट इज विद इन द लॉ इटसेल्फ. बट उन्होंने ये नहीं कहा कि यू विल हैव योर पर्सनल लॉज थ्रू विच you will be judged in Goa. No. A Hindu code will not be effective in Goa. A Muslim personal law will not be effective in Goa. In Goa, even if you are from any religion, a Christian code will not be effective in Goa. If you are a Christian, a Muslim or a Hindu in Goa, you also will be judged through the 1867 Portuguese code. So that makes Goa a place which has the application of a uniform civil code. ठीक है? देखिए UCC and Goa. UCC हेडिंग लगाइए, UCC and Goa. Portuguese Civil Code 1867. Portuguese Civil Code 1867 was applicable in Goa
was applicable in Goa, full stop. When Goa joined India, in 1961, it inherited the same personal law, ठीक है. फिर लिखिए प्रोविजंस इन गोवाज यूसीसी, यानी गोवा के यूसीसी के कुछ मेजर प्रोविजंस क्या है इन गोवाज यूसीसी. फर्स्ट, नो पॉलीगैमी रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, which means you can't marry more than one woman despite hailing from any religion, because there will be no polygamy allowed as per the 1867 Portuguese Civil Code. हालांकि polygamy allowed है, यानी दूसरी शादी अलाउ है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना. नो पॉलीगैमी रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन. शादी हो गई तो मैरिड कपल विल शेयर द प्रॉपर्टी इक्वली, ठीक है. तो अनलाइक द अदर सिविल कोड्स वेयर देयर इज नो रूल्स विथ रिगार्ड्स टू शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द मैरिड कपल्स, बट गोवा में, सो वंस यू आर मैरिड, एक तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना है, प्लस मैरिड कपल्स विल शेयर द प्रॉपर्टी इक्वली. तो पुरुष ने जो कुछ भी मेहनत किया है और अपनी मेहनत खून पसीने से अर्जित किया है, जिस दिन उसका विवाह हुआ उसकी आधी संपत्ति उनकी स्त्री की हो गई, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी शेयर. द प्रॉपर्टी हैज टू बी शेयर्ड equally by the married couple. The property has to be shared equally by the married couple. फिर प्रॉपर्टी शेयर में एक और बात लिखी हुई है, व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन में ये लिखा हुआ है दैट यू हैव टू कंपल्सरीली शेयर हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी विथ योर चिल्ड्रन. नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स मस्ट कंपल्सरीली शेयर, यानी कम से कम आधी, उससे ज्यादा भी कर ले तो कोई बात नहीं, है ना, बट एटलीस्ट हाफ. पेरेंट्स मस्ट कंपल्सरीली शेयर एटलीस्ट half of the property with their children including daughter. यानी यहां भी मेल और फीमेल चाइल्ड में कोई भेद नहीं है. जो भी मतलब चिल्ड्रन शब्द लिखा हुआ है, चिल्ड्रन मतलब इट कुड बी आइदर मेल और इट कुड बी फीमेल, इट कुड बी डॉटर और सन. So it's compulsory to share half of the parental property to the children. At least they can share more also. Plus whatever property is left, it is equally divided between husband and wife. ठीक है. हाँ. So divorce में उत्तराखंड सिविल कोड, पोर्तुगीज सिविल कोड विल, सॉरी उत्तराखंड बोल रहा हूं मैं, उत्तराखंड तो अब बोलना है. So पोर्तुगीज सिविल कोड will be applicable. हाँ. So there is a issue of divorce, then it will be guided by that civil code, है ना. Not personal. Portuguese civil code, that's the personal law. Yeah, why not? Plus maintenance. Next, marriage should be compulsorily registered. Marriage should be compulsorily registered before a civil authority. Full stop. फिर लिखो note. Uttarakhand has also passed Uttarakhand Uniform Civil Code 2024. So Uttarakhand is like the second state that we have in India with a uniform civil code.
उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक्सेप्शन है. इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्राइबल्स, क्योंकि भारत इतना डाइवर्स है. और यहां सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है हमें सिविल कोड के साथ? व्हाट अबाउट द ट्राइबल्स? आर वी गोइंग टू इंटरफेयर विद देयर सिविल कोड्स आल्सो? सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी क्लियर. झारखंड का चुनाव हो रहा था और वहां पर होम मिनिस्टर भाषण दे रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा तो उसमें ट्राइबल्स पर वो लागू नहीं होगा. ट्राइबल्स विल स्टिल कंटिन्यू टू हैव देयर सेपरेट पर्सनल लॉज, एज इट एग्जिस्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में कभी भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता, बिकॉज there will still be certain communities who will be given exemptions under the uniform civil code premises as well. ठीक है, अब इसके एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म ऑफ द यूसीसी. क्या हुआ?